ऑन मार्च 2 मार्च को चाइल्ड लाइन का थ्रू से और पुलिस का थ्रू से एक बच्चे को लेके आया है, लड़की था, लेके आया है। और जब भी डिस्ट्रिक्ट में कुछ बच्चा खो जाता है या चाइल्ड लेबर का बच्चा मिल जाता है या थाना में बच्चा आता है या चाइल्ड लाइन में आता है, तो सब लोग उन लोगों का काम ही होता है कि CCI चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट में बच्चा लोग को लेके आना है। तो वो लोग लेके आया, तो हमने देखा बच्चा को, तो बच्चा को पूछा है, तो बच्चा तो बोला है कि हम भाग गया था। तो कहाँ भागा था? बोलते ऊपर तरफ भागा था बोला है। बाद में पता चला है कि वो 6 किलो में भागा था। तो बच्चा रखा है हम लोग का साथ में। तो यहाँ में हम लोग का पास काउंसलिंग हुआ बच्चा का, क्योंकि यहाँ में काउंसलर भी है। तो काउंसलिंग हुआ 2 बार 3 बार काउंसलिंग हुआ, और काउंसलिंग के थ्रू बच्चा बताता है कि उनका साथ क्या क्या हुआ है। तो वो लोग ने बोला है कि हमको मारता है, पीटता है, काम लगाता है, उतना ही बोला है। और बोला है कि हम नेपाल से आया है, तो वो उतना ही बोला है। तो हम लोग उसको इतना वो सीरियस नहीं लिया है। उसका बाद में बच्चा ने रिवील तो किया ही नहीं कि हम लोग का सामने कि उसका साथ में मोलेस्टेशन हुआ है कि क्या हुआ है, वो नहीं बताया। लेकिन कल को CWC का सिटिंग था, तो एक दिन पहले हमको कहीं गांव से पता चला है कि ये बच्चा का साथ में मोलेस्टेशन हुआ है। तब हम CWC का काउंसलर को फ़ोन करके बताया है कि बच्चों को अच्छा से पूछिए, क्योंकि बच्चा का साथ मोलेस्टेशन हुआ है वो ना। और बच्चा दूसरा को बता रहा है, लेकिन हम लोग को नहीं बताया है। और जब बच्चा नहीं बता रहा तो हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो जब बच्चा CWC ऑफिस गया, CWC का काउंसलर के सामने में बोल दिया है कि उसका साथ सेक्सुअली अब्यूज़ हुआ, मोलेस्टेशन हुआ, सब डिटेल बच्चा ने वहाँ बताया है। और जब हमको CWC को ऑफिस में बुलाया गया है कि ये बच्चा ने ऐसा बता रहा है ना, और बच्चा भी बोल रहा है, तो हमको नहीं लगता है कि ये बात को छुपाना चाहिए, ये बात को हम लोग को दबाना है। लोग जाके सुमोतो पुलिस स्टेशन में दिया है। So we are speaking on behalf of the victim child, who is a minor, purely based on the statement that we have received from her. No matter whether she is from Nepal, from India, from Lower Dibang Valley or anywhere, but we consider a child is a child who is not mature enough to take a right decision. That's the reason why there are so many stakeholders at the district level, like DCPU, CWC, Childline, CCI, Police Department, who also overseeing the protection of child rights. So I would like to go by the statement of the child, the way she manifested or articulated what has happened to her. She stated that she came to India when she was a very small girl. And the way she narrated that she has been used by the house owner ever since she came from Nepal for so many years. That's the gravity of the crime that has committed by the accused. So we have video, audio, evidences, footage, and as Desai Madam has stated, the child ran away from the accused house twice. When she ran away first time, when she stayed in that particular house for 2 days, that video footage we have, evidences we have. And the second time she ran away and she was rescued on 2nd March 2021. We have audio video clips to prove that yes, the child has been raped, molested for years. And when it comes to a few sections that I would like to highlight, the accused has violated IPC section 375 of rape case, section 377 of unnatural sexual offense, and of course POCSO Act section 4 of penetrative sexual assault. The concerned stakeholders at the district level has gone through a lot of procedures, legal procedures like filing of sumoto FIR, police department charge sheeting, and then medical examination was done, sport investigation, identification of the offender, all that. But there are a few things that which are of concern for us. The way the session Tezu Court has passed the order, it is arbitrary, which is not in defense of a child who is in need of care and protection. Why I say this? Because the father who came to India few months back has been staying in the accused house for long, and by the counselor of the accused, the father has been made the petitioner to file a case against IO, investigation officer of the police department, the CWC and the CCI. Why this grouping has been done?
when the biological father of the child can't read and write or he is uneducated, he is made to sign in the application form where they have stated that the minor child has been illegally detained at CCI. CCI receives as per the order of the CWC when we go by the JJ Act and POCSO Act, and CCI has to keep the child because the child has been found to have gone through sexual molestation, rape, and the child is mentally not steady and she needs special counseling. For these reasons that she has been kept till date at CCI and not given back to the biological father, in spite the order passed by the Special Court, Session Court Teju. And I would like to make known to our media fraternity that such as this case has to be highlighted in the media, and everyone has to know that injustice done to a minor of this case that we are speaking about is a very, very serious case, because the child belongs to no religion, no community, no country. A minor is a minor, and it's everybody's duty to protect the child and to safeguard the sanctity of POCSO Act and JJ Act. Today we are raising our views and opinions before the media. हम लोग को इतना हेल्पलेस फील होता है कि बच्चा बता रहा है, जान रहा है, मान रहा है और सबको मालूम है ये चीज़ को लेके, लेकिन क्यों ऐसा लगता है कि ये केस को दबाने के लिए और ये केस को उल्टा बच्चा का कैरेक्टर ख़राब कर बोला गया, उल्टा बच्चा बदमाश है बोला गया, उल्टा बच्चा को ब्लेम लगा के, और जो कल्प्रिट है उसको ऐसे खुला घूमने दे रहा है। और जो क्राइम जो मोलेस्टेशन जिस तरह से वो बच्चे का साथ करता था, वो बच्चा बोलता है कि हम इतना छोटा से आता था, हमको मालूम भी नहीं था वो अंकल मेरा साथ ऐसा करता है। हाँ, आप लोगों को ये वीडियो भी देखने मिलेगा कि बच्चा अपने आप से बोल रहा है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। कुछ चीज़ क्लियरिटी नहीं होगा, लेकिन आप लोग को खुद समझना पड़ेगा। वो वीडियो भी हम लोग रिलीज़ करेगा, आप उसको भी देख लीजिए। ये वीडियो हम लोग बनाना भी नहीं चाहता था, ये 4 महीना हो गया, हम लोग सोचा कि कानून को ऊपर छोड़ देगा तो हो जाएगा, लेकिन अभी देखने से लग रहा है कि ये कहीं में भी हम ये बच्चा को जस्टिस मिलेगा ही नहीं जैसा लगा है। इसलिए हम लोग मजबूर होकर ये वीडियो बनाना पड़ा है, ये वीडियो देना पड़ा है और रिलीज़ करना पड़ा है आप लोगों के सामने में। प्लीज़ जो अरुणाचल का जितना भी लोग है, जितना भी है, हम चाहता है कि आप लोग इस बात को, ये मुद्दा को उठाओ। यही नहीं है कि ये नेपाली बच्चा है, हम लोग को ट्राइबल बच्चा नहीं है, लेकिन किया तो ट्राइबल आदमी ने, यहीं का आदमी, अरुणाचल के आदमी ने किया है। इसी से पता चलता है कि कितना बच्चा होता होगा, कितना लोग होता होगा इतना मजबूर में बैठ के, कितना लोगों के साथ ऐसा होता होगा। ये एक हम लोग सब साथ में मिलके ये चीज़ को अगेंस्ट करके और ये बच्चा का जस्टिस के लिए आप लोग भी फाइट कीजिए, आप लोग भी बोलिए, हम लोग को भी मदद कीजिएगा। क्योंकि जो जिस पोस्ट में बैठा है वो लोगों ने बच्चा का जस्टिस के लिए कुछ भी नहीं किया। सब वही कल्प्रिट आका कालूंग का साथ में है, वो फ्रीली घूम रहा है, वो फ्रीली जहाँ भी जा सकता है, और बच्चा को हम लोग को यहाँ अंदर में रखा हुआ है और उसको बोलता है कि उसका पिताजी को वापस देने, और पिताजी वो कल्प्रिट का घर में बैठा हुआ है, रेपिस्ट का घर में बैठा है, और बच्चा उसका पिताजी को ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है। तो हम लोग कैसे ज़बरदस्ती भेजेगा? अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया होने से भी हम नहीं भेज सकते बच्चा को, इसलिए नहीं भेजा है। रोइंग कोर्ट सेशन मजिस्ट्रेट को एक सवाल पूछना चाहते हैं। एज पर 164 CRPC, when you took the statement of this minor victim, we are told by the superintendent who accompanied the child from CCI that you do not allow anyone to come inside while taking statement. As per the JJ Act, child has to be accompanied by the family or by someone with whom the child has some confidence and trust, so that the child can articulate the statement very clearly. But why the magistrate has taken the statement only with the child? So here also there's a big question mark whether the child's statement which has been expressed by the child has been fully noted by the magistrate or not, which has got a great impact on the order which was passed by the magistrate. So the then CWC after much pressure, the child was rescued on 2nd of March 2021, and CWC on 22nd March 2021 filed sumoto FIR and submitted to the IO of Police Department. Following that, IO charge sheeted the case with number 22
oblique 2021 under section 376 of IPC, section 2 and F, which also relates to section 4 of POCSO Act. So that's how the police has stepped up. So as far as the report of IO, Roing police station goes, the accused was informed to be arrested, but he got interim bail again. My name is H. Bangse Inspector, OCPS Roing, the case number 22/21. Under section 376, bracket 2, bracket F, IPC, read with section 4 of POCSO Act. A missing report of a minor was received on 1/3/2001 from Shri Aka Kalung, and on 2nd March 21, victim was recovered from Kabale village about 6 kilometers towards north, and our lady officer, after recovery, our lady officer has brought the victim to PS and counsel her, but the victim did not disclose anything regarding her missing event. Subsequently, she was handed over to the Childline Roing for further necessary action, and Childline Roing handed over the victim minor girl to CCI for safe custody with intimation to CWC Roing. On 11th March 2001, first counseling of the victim was done by the counselor DCPU, but still the minor victim did not disclose anything. On 18th March 2001, minor girl was counsel. A counsel was taken place again. A minor girl disclosed about the sexual assault and molestation to the counselor DCPU by her employee Aka Kalung, who has committed the sexual offense against her. On 22nd March, an order received from Chairperson CWC about the sexual assault on the victim by her employer. Accordingly, a case was registered and investigation taken up by lady officer. Immediately, the lady officer with the team rushed to the residence of the accused, but they could not trace him. He was found absconding. On 20 April 2001, named accused Aka Kalung was arrested, and a case has been made against him as charges had been made against accused Aka Kalung. Now the case is in the court, and in connection with this case, accused has admitted his guilt, and accordingly a charge sheet has been framed against him. The charge sheet has been framed under section 376 bracket 2 bracket F IPC, read with section 4 of POCSO Act.